Assalamu alaikum. Hello. Welcome to another lesson in Theory Made Easy. I think this is the last part of the chapter Alertness. So, the first question, you're traveling along this road. आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं. How should you pass the cyclist? ये जो cyclist है, आप इसको किस तरह पास करेंगे? इसके पास से कैसे गुजरेंगे? Sound your horn as you pass. अपनी horn बजाते हुए गुजरे. Keep close to them as you pass. या बिल्कुल इनके साथ रह के उसको पास करें. Leave them plenty of room as you pass. या उनको काफी room दे उनको पास करने जब आप उनको पास करेंगे. Change down one gear before you pass. और अपना गियर कम कर लें. एक गियर. सो अगर थर्ड में है तो सेकंड में जाए, सेकंड में है तो फर्स्ट में जाए. तो वी गोइंग टू एक्सप्लेन आंसर. Allow the cyclist plenty of room in case they wobble or swerve around a pothole or raised drain. Around a pothole, potholes होते हैं जैसे गटरिंग वगैरह होती है, और raised drains या गटर थोड़े से ऊपर बने होते हैं. Look well ahead before you start to overtake. Overtake करने से पहले काफी आगे तक देखें, because you'll need to cross the hazard line. क्योंकि आपको hazard line cross करनी पड़ेगी. Look for entrances where vehicles could be waiting to pull out. Sides पे ये भी देखना है कि side रोडों से गाड़ियां तो नहीं आ रही. So leave them plenty of room as you pass. Next question. What should you do if your mobile phone rings while you're driving or riding? So this question we've covered it before. This one has got different wording. इसकी wording different है. So first one, stop immediately. अगर आपका phone ring होता है तो आप immediately stop करेंगे. Answer it immediately. उसी वक्त immediately answer करेंगे. Leave it until you have stopped in a safe place. या छोड़ देंगे और जब तक आप safely park नहीं है उसको आंसर नहीं करेंगे. और pull up at the nearest curb या nearest curb पे pull up करके फिर वो आप आंसर करेंगे. So the answer is leave it until you have stopped in a safe place. Next question. What's likely to happen if you use a hands-free phone while you're driving? अगर आप एक hands-free phone use करेंगे तो उससे क्या हो सकता है? It will improve your safety. उससे आपकी safety बढ़ेगी. It will increase your concentration. उससे आपकी concentration बढ़ेगी. It will reduce your view. या उससे आपका view कम होगा. Or it will divert your attention. So previously we've discussed this question as well, so we can go straight into the answer. It will divert your attention. Next question. Why should you switch your headlights on when it first starts to get dark? आप अपनी headlights क्यों switch on करेंगे जब थोड़ा थोड़ा होने लगे? To make your dials easier to see. So आपके जो डायल हैं आपके इनसाइड कार में वो आपको इजीली से नजर आ जाएं. So others can see you more easily. या दूसरे आपको देख सके आसानी से. So that you blend in with other drivers. या आप दूसरे ड्राइवर्स से के साथ blend हो जाएं, सब एक तरह नजर आए. Because the street lights are lit. या street lights lit हैं तो आपने भी अपनी lights on करनी है. So if we're going to explain answer. Your headlights and tail lights help others on the road to see you. So आपकी जो headlights हैं and tail lights, जो पिछली lights हैं उनको tail lights बोलते हैं, वो दूसरों को मदद देते हैं क्योंकि वो आपको देख सकते हैं. It may be necessary, लाजमी शायद हो, to turn on your headlights during the day if visibility is reduced. जरूरी हो सकता है शायद कि आपको दिन में भी अपनी हेडलाइट्स ऑन करनी पड़े. जब काफी दिन में अंधेरा छाने लगता है तो आपको अपनी हेडलाइट्स ऑन करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू हैवी रेन, जब हैवी रेन होती है, इन दीज कंडीशंस, इन हालात में
the light might fade before the street lights are timed to switch on. So light जो है natural light है वो शायद fade हो जाए, और street lights जो है उनका timing होती है, तो वो अपनी timing से on होती है. So अगर अंधेरा हो रहा है स्ट्रीट लाइट ऑन होने से पहले, तो आप अपनी हेडलाइट्स ऑन कर लें. बी सीन टू बी सेफ, आप दिखें सेफ रहने के लिए. So others can see you more easily. And then we get to the last question in our alertness chapter, and hopefully we've got them all correct. Objects hanging from your interior mirror. Why could this be a hazard? So चीजें आपने अपने इंटीरियर मिरर से हैंग की हुई हैं, ये खतरे का बाइस क्यों बन सकती हैं? जैसे हम लोग अक्सर उधर तस्बीह लटकाते हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स लटकाई होती हैं लोगों ने. Why could this be a hazard? ये खतरे का बाइस क्यों बन सकती है? Your view could be obstructed. आपका व्यू जो है वो कम हो सकता है. Your sun visor might get tangled. आपका जो sun visor है वो शायद उसमें पड़ जाए. Your radio reception might be affected. या आपकी रेडियो रिसेप्शन उससे अफेक्ट हो सकती है. Your windscreen could mist up more easily. So या आपकी जो विंड स्क्रीन है वो थोड़ी सी foggy हो जाएगी. Mist up का मतलब होता है भाप सी बन जाती है. So if we go into explain answer, ensure that you can see clearly through the windscreen of your vehicle. आपने इंश्योर करना है कि आप अपनी विंडस्क्रीन से सही बाहर तरफ हर चीज दे सकते हैं. Stickers or hanging objects. Stickers या hanging objects जो लटके हुए होते हैं could obstruct your view. आपका व्यू, आपके व्यू में रुकावट बन सकते हैं. Or draw your attention away from the road. या आपका ध्यान रोड से बच सकता है, शायद आप उनको देखने लगे, चीजों को जो लटकी हुई हैं. Hopefully everyone gets 100% in the alertness chapter, and I'll see you in another video.